Now the company ABC This is meeting reaching is out to being Cisco. recorded. Why? Because Cisco is saying the devices which we are using, router, that is no more support after 2022. In that case, Cisco will say, okay, definitely will help you to deploy the SD-WAN. What is the solution? SD-WAN. But there are, in the deployment, during the deployment process, there are something that needs to be performed by you, and there are something that needs to be done by Cisco. So in that case, Cisco will ask some question to the customer. Organization name. And the second question is number of the sites or number of the vEdges. Number, not the site, number of the vEdges. Certificate. First question is, what is your organization name, number of the vEdges, and certificate. So this guy will reply, okay, this guy will reply with the information. Let's assume it is going here. Organization name is ABC. And number of the vEdges, let's assume 500. Certificate. Certificate part, actually, okay, we'll discuss. Certificate will come later in the class. That is the very deep discussion about that. Certificate, let's suppose Cisco, this customer is saying you only provide, means Cisco will provide. Okay. Now customer is sharing this information, organization name, number of the vEdges, number of the vEdges that I need. In that also, okay, don't be confused. Okay, 500. Certificate is Cisco will provide, means they are asking you only provide the certificate. Okay. Now the next question from the, okay, this is the reply to Cisco, and next question from Cisco. Registered over CCW. CCW means Cisco Commons Workspace. Okay. So actually this is the portal where you have to register your company. Cisco CCW. Cisco Commons, right? This is the portal from Cisco where you have to register your company. This portal is basically we use to order the devices. Let's suppose you want a hardware from Cisco. Let's assume you need some hardware from Cisco. Let's suppose ASR router. So ASR router, see, we people are working in the backend, right? We just get the device from Cisco. We are not bothering the device process from the Cisco point of view or from the organization point of view. We are just getting the device at the our branch office. But in the backend, there are a lots of steps. First of all, the manager. This manager will request to the organization that I need the ASR router at the branch office A. This request will go to the procurement department. That procurement department will open a bid. And some company, they will reach out to your and they will say, okay, we'll provide the ASR router. Okay. And let's suppose there are three companies, 1, 2, 3. The one is saying I will give you 10K. Just an example. The next is saying 9K. Next is saying 8K. So definitely you will go with this company. Okay. But how come the same company, how come the same device
is coming with the 3 different price. Same ASR router, right? Same ASR router. Partner का margin depends upon this. I was coming on that point. So ASR router is same, but the same that we have the 3 vendor, and they are saying the first vendor is saying I will give in 10K, second is 9K, third is 8K. Actually, it means this third vendor is having a premium partner from Cisco. They are the premium partner with the Cisco, so they will give you the additional discount over that. Now over the 8K, this premium partner will order the device from here, from this portal. Okay, from this Cisco Commons workstation, they have the partner premium account. From there they will order, and they will mention all the detail, means the model of the ASR router. Okay, okay, power supply, annual maintenance charges, those things, right? And they will also mention the location where the router or ASR router supposed to deliver. So they will take the 30 days, that is the lead time, or 15 days or 20 days. In between that, the device will get delivered at site, and you will get the device at the branch office and do the console and configure the device. But in the back end, these are the process. Okay, so the point here is, when you want to deploy SD-WAN, you also have to register yourself where? CCW, Cisco Commons Workspace or Workstation, your organization name, number of the vEdges. Okay, forget about this thing, we'll see later. And certificate part. So when you registered yourself there in the CCW, and from the CCW itself, you will order your device. So when you get the device from Cisco, over the device itself, you will get the hard-coded organization name and certificate. It's a very tricky thing actually. देखो मैं फिर से समझाता हूँ. अभी क्या होता है, देखो अब ये कस्टमर सिस्को बोल रहा है कि भाई आपको ना CCW जो पोर्टल है, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसने क्या किया, abc.com से रजिस्टर कर दिया. अब जब इसने रजिस्टर्ड किया, अब क्या होगा, अब जब आप हार्डवेयर डिलीवर, मतलब हार्डवेयर उससे मांगोगे, कौन सा हार्डवेयर मांगोगे, vEdge मांगोगे या cEdge मांगोगे, तो उसके ऊपर ना ऑर्गेनाइजेशन नेम और सर्टिफिकेट दोनों जो है कि हार्ड कोडेड होके आता है, ऑलरेडी इनबिल्ड होता है उसके ऊपर. इसका एडवांटेज क्या होता है ना, इसका एडवांटेज इस ऑर्गेनाइजेशन नेम का और सर्टिफिकेट का एडवांटेज क्या होता है, हम जब डिस्कस करेंगे ना जीरो टच प्रोविजनिंग, उस टाइम में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, नाउ ये पैकेज को आइडेंटिफाई के लिए भी तो होता होगा, हार्डवेयर डिलीवर्ड पहचान ले किस कंपनी का है. हाँ, वो बैकएंड में होता है. when we discuss the ZTP zero touch provisioning ना, at that time I will explain you the advantage of these two components. ठीक है, वो सेपरेट टॉपिक है. अगर if I discuss here ना, तो पूरा मिसमैच हो जाएगा, मैचअप हो जाएगा. ठीक है, अभी हाँ इसको हटा देते हैं. पर याद रखना, जब हम ये हार्डवेयर डिलीवर करते हैं ना, हार्डवेयर ऑर्डर करते हैं, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन नेम और सर्टिफिकेट तो 100% रहता ही है. ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑप्शनल रहता है, बट इट इज ऑल्सो मैंडेटरी. ठीक है, अगर आप नहीं रखोगे तो आपको अपने आप से ऑर्गेनाइजेशन नेम कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बट सर्टिफिकेट तो 100% ट्रू है कि रहेगा ही रहेगा. ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ भाई, इन्होंने क्या बोला, ठीक है आप यहाँ पे रजिस्टर करो. कहाँ पे रजिस्टर करो, CCW पे. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, ओके अब क्या होगा, रजिस्टर कर दिया. अब वो इंफॉर्मेशन जाएगा, दैट इंफॉर्मेशन विल गो टू Cisco
that information will go to Cisco with the organization name ABC. Now Cisco has the required information. Cisco, the certificate is from Cisco itself and the organization ABC. So there are two things, organization name plus certificate. With this information, Cisco will reach out to AWS and they will deploy your controller. Which controller? vManage, vSmart and vBond. अब देखो इसमें दो, एक ये जो vBond होता है ना, इसके लिए दो पॉइंट होते हैं. कौन सा पॉइंट होता है? अब देखो, in entire infrastructure of fabric, this is the single device where we need the public IP. Agree? अब सिस्को क्या बोलेगा, भैया आप मुझे ना पब्लिक आईपी भी दो, अपना पब्लिक आईपी दो, जो पब्लिक आईपी मैं यहाँ पे व्हाइट लिस्ट कर सकूं. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना पब्लिक आईपी देता है, इफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग इट्स ओन पब्लिक आईपी एड्रेस, so that public IP address must be whitelisted in Cisco network. If not, Cisco will provide its own public IP for vBond, and this public IP address this organization ABC will use. If the public IP is from the organization itself, so that information will be there with the organization. In that case, that public IP address must be whitelisted in Cisco portal. Cisco means AWS or Cisco. Let's consider Cisco, not AWS. Cisco. If Cisco is giving it's okay, now you are saying no, you provide me the public IP. If Cisco is providing, then it would be already whitelisted that IP address for the vBond, and this vBond IP address we use for the authentication purpose. Okay. Now we have the vManage, vSmart and vBond with the public IP address. Cisco will take 7 to 10 days, working days, to deploy this controller. To deploy this controller means up and in running condition. After in between 7 to 10 days, you will get a reply from Cisco that your vManage IP address is, let's suppose something HTTPS : let's assume 199, or let's assume not IP address, let's assume abc.com or any port number or some additional something. When you put this URL over your browser, then you will get a page something like this: vManage login. You will get a page something like this, where you need to put the username password provided by Cisco. When you put the username password over there, you will get a dashboard something like this. Okay, so each and everything will be done in our lab. Okay, we'll deploy under the deployment section. We'll do each and everything from the scratch. Okay, now in 7 to 10 days, Cisco will provide this information to you, and after that, when you do the HTTPS : //abc.com, you will get this pop-up to put your username password. There you need to put the username password. Under that, you will get a one vSmart, two vSmart, one vBond, and one vManage. But you will not get any vEdge, because the controllers are being ready, not the vEdges. vEdges at the branch location. Now after that, you need to do the
migration from legacy to your SD-WAN. Your controller is ready means your data center is ready. Now it's a like correlate with the data center. Now your data center or controller is ready. Now your branch will communicate with the vManage. Okay. The branch that is running on the legacy routing. So that router will not communicate with the vManage. You also have to migrate your legacy router to SD-WAN router means with the help of the vEdge router. When you migrate your legacy router 1900 series, 2900 series with the SD-WAN router, then they will interact or they will communicate with the vManage. The vManage which is sitting inside the Cisco cloud. And the Cisco cloud, why it is sitting inside the Cisco cloud? Because that is the best and recommended deployment from the Cisco. Okay? Any doubt? Hello, can you just repeat once actually? Which one? Because I was disconnected. The entire you want me to repeat or like any specific topic? No, not entire. Just now what you told, na, that one you repeat. अच्छा देखो क्या होता है there are two things actually. One एक होता है हमारा Cisco होता है और एक हमारा होता है कस्टमर ABC होता है. ठीक है. Now customer, okay, now customer is going to the SD-WAN solution. ठीक है. अब SD-WAN पे जा रहा है तो he will reach out to Cisco. अब Cisco पूछेगा भाई मेरे को ऑर्गेनाइजेशन नेम दो. अब ये ऑर्गेनाइजेशन आप Cisco को दोगे. कैसे दोगे आप? CCW के थ्रू. That is the portal from where we order the devices. Which devices? Router, switch, firewall. ठीक है. जो भी Cisco के devices होते हैं ना वो हम यहाँ से ऑर्डर करते हैं. ठीक है. तो अब क्या होगा जब आप इसको ऑर्गेनाइजेशन नेम दे दोगे यहाँ पे आप सर्टिफिकेट बोल रहे हो कि भाई सर्टिफिकेट आप इसको खुद ही मैनेज कर लो. हम आपको उसके लिए पेमेंट कर देंगे. आप खुद ही मैनेज कर लो. अब क्या होगा सिस्को के पास ऑर्गेनाइजेशन नेम हो गया और सर्टिफिकेट हो गया. विद दिस इंफॉर्मेशन सिस्को विल गो टू आवर इंटरनल क्लाउड दैट इज होस्टेड ओवर AWS. ठीक है. अब AWS के क्लाउड में Cisco will deploy a controller. Which controller? vManage, vSmart और vBond. अब ये कंट्रोलर जो है कि Cisco AWS के क्लाउड में डिप्लॉय करेगा इन 2 रीजन. Let's assume one is Mumbai, another is Singapore. तो उसमें क्या होगा आपको रिडंडेंसी रहेगी. ठीक है. अगर आपका मुंबई डाउन चला गया तो यू विल आल्सो हैव द एक्सेस फ्रॉम द सिंगापुर. तो वो 2 रीजन में उसको डिप्लॉयमेंट करते हैं. फॉर दैट पर्पस दे टेक Cisco takes 7 to 10 days for the entire deployment. Which deployment? vManage, vSmart और vBond. ठीक है. Once this is ready, they will provide a URL. www. HTTPS organization abc.com or some port number 443 something 4443. Let's assume 8443. When you put this thing over the browser, then it will give you the dashboard something like this, where you need to put the username and password like whatever abc@123. ठीक है. Then you will have the access of your controller. That is something like this. Here, if you see, one vSmart, one vEdge will not get. vEdge will see later. One vBond and one vManage.
You will get all the things, but not the vEdges, because vEdges are not getting authenticated. It's not migrated. Your controller is ready. Now the next step is where we need to migrate our branch offices. If you guys are part of the migration team, remember one thing. First of all, data center gets migrated. Once the data center gets migrated, then we'll go for the branch office migration. We never do the branch office migration first, then for the data center. We always do the migration for data center, then we'll go for the branch offices. So your controllers are ready. Then the next step is to migrate the legacy router 1900 series, 2900 series with the vEdge router. Clear? ठीक है? Go ahead. Okay. Next is bring up process. For controller and vEdge. So let's assume this is the vManage, vSmart, vBond. ठीक है? vManage, vSmart, vBond. So initially these devices will be off. Then we need to do the on. So when a vManage comes up, first of all, we turn on the vManage. It will authenticate with the vSmart. And it will also authenticate with the vBond. When you turn on, okay, this is the first step. When you turn on the vSmart, it will authenticate with the vManage, and it will also authenticate with the vBond. And when you turn on the vBond, it will authenticate with the vSmart, and it will also authenticate with the vManage. And these three things are controller. So first of all, when we deploy the controller in where? AWS cloud, that is with the help of the Cisco. So forget about the AWS, let's focus on the Cisco. When you deploy or when you ask Cisco to make the controller ready, so this is what happened in the backend. Cisco will on the vManage first, then vSmart, and then vBond, and all these three devices will authenticate with each other. vManage will authenticate with the vSmart, vSmart with the vBond, and vBond will authenticate with the other devices. Okay. Then now this infrastructure is ready. The next step is to authenticate the vEdge. When you turn on the vEdge, initially it is off. When you turn on the vEdge, first of all, remember very important statement. First of all, it will reach to vBond. For what purpose? For authentication.
It's an interview question. Most of the time you will face this question. When a VH comes up, the traffic, the VH goes to whom? vManage, vSmart, or vBond. So remember this very important thing. It goes to vBond for authentication purpose. Once the vBond will authenticate VH, then this connection, that is basically a DTLS tunnel, it will get tear down and it will have the connection with the vSmart and vManage. And vManage will push the configuration. vManage will push the configuration to vEdge, and the configuration which is already made by a network engineer. Okay? So here, don't be confused about this thing. Just remember one very important, because this will come into the next classes. The very detailed discussion we have for this. Okay? So remember one thing: when a VH comes up, first of all, it will reach out to vBond. Why vBond? Why not vManage and vSmart? Because in the entire fabric, this is the single device where we have the public IP. And here you will connect the internet. And internet is reachable over the internet, not over the MPLS. These all devices will have the private IP address. So public to private communication is not possible unless until you are doing the NAT. Okay? But public to public communication is possible. So first of all, when a VH comes up into the picture, it will authenticate with the vBond. The authentication happens with the help of organization name and certificate. This is the advantage of when a Cisco is asking, give me the organization name or certificate. Okay, we'll discuss in very detail about this thing. No worries. This all will be discussed into the ZTP, zero touch provisioning. Okay, very detailed discussion we have into the ZTP. Okay, clear till now? Any doubt? Okay. Let's go for some basic thing. The controller and the vEdges, like vManage, vSmart, vBond, vEdge. The default username is admin. Username, password, admin. Okay. So till now, you guys have already seen, okay, like if you want to go for the deployment, if you want to go for the iOS upgradation or anything, we have the iOS image and iOS XE from Cisco. This is what we have seen. Let's see the SD-WAN. Okay. So come to the portal software.cisco.com. Over the browser, put the software.cisco.com. software.cisco.com. Okay. When you come to this portal, the first one, after that you have the multiple choice. Either you can directly select search it, or you can go the browse all. Browse all. Under that you need to go to the router, because we are SD-WAN is a router. Okay. Over here क्या कर रहे हैं हम ये राज? हाँ, ये बेसिकली क्या कर रहा है ना, हम लोग जैसे जो हमारा कैटलिस्ट होता है ना, उसमें हमारा इमेज होता है, iOS होता है और iOS XE होता है। इसी तरह सिस्को का एक
सेपरेट इमेज है, वो मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे होता है, ठीक है, और कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। iOS और iOS 6X क्या है? X6 iOS and iOS XE, this is the image from the Cisco for their devices. जैसे अपना मोबाइल में होता है ना, एंड्रॉयड होता है, ठीक है। ओके X6 वर्जन है मतलब कोई? नहीं X6 वर्जन नहीं है, XE एक्चुअली ना एक लिनक्स पे इसको कोडिंग किया हुआ था। ये इनका तो ये तो इनके खुद के प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म पे है, और XE जो है दैट इज डेवलप ओवर द लिनक्स। एक्सटेंडेड होगा, XE का मतलब एक्सटेंडेड। हाँ ठीक है। तो कहाँ पे था, हाँ अभी देखो राउटर के अंदर जाना, राउटर के अंदर ना यहाँ पे जाना आप लोग, SD-WAN, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड WAN, SD-WAN, क्लिक हियर। व्हेन यू क्लिक हियर यू विल हैव दी Meraki, sir forget about the Meraki, SD-WAN XE SD-WAN means this is from the Cisco, ठीक है। देखो ये है मेरा जो सबसे लास्ट वाला है, दैट इज फ्रॉम द Viptela, दैट इज फ्रॉम द Viptela, एंड दिस इज फ्रॉम Cisco, ठीक है। अभी नाउ लेट्स कम, if you click on this device here, what you get the ASR router, CSR router and ISR router. So ASR router, CSR router, ISR router, ठीक है। Remember 1000 series, 1000V, 1000 here also, and ISR 4000 series, ठीक है। And if you click on the vEdge router here, you will get the vEdge router model. If you click further, click on this vEdge software. When you click on the vEdge software, you will see that 100B, 100M, 1000 and 2000, ठीक है। This image is applicable to all the Viptela devices, ठीक है। Right now version is 20.6.3, the lower one is 20.2.5, ठीक है। So if you want to get the image from the Viptela box, we need to come here under this, and if you want to get the image for Cisco box, then you need to click here, ठीक है। If you click anyone, you will get the iOS XE SD-WAN and iOS XE. Remember मैंने बोला नहीं था, इन्होंने क्या किया, सिस्को ने क्या किया, कोडिंग जो है विप्टेला की कोडिंग जो है कि उन्होंने क्या किया, मर्ज कर दिया ISR, CSR और हाँ ASR राउटर के साथ। तो यहाँ पे ना देखो ये SD-WAN का इमेज है, सॉफ्टवेयर है, ये हमारा जिसका क्या है, ये नॉर्मल राउटर का है, लेगेसी और ट्रेडिशनल राउटर है, ठीक है। SD-WAN पे क्लिक करोगे तो ये तुमको दिखेगा यहाँ पे 16.12.5 है, ठीक है, SD-WAN iOS XE SD-WAN सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे तुम देखोगे ना, यहाँ पे ना नहीं आएगा, यहाँ पे SD-WAN नहीं आएगा, देखो नॉर्मल अपना आ रहा है, डॉट बिन फाइल आ रहा है, ठीक है, जो एक्सटेंशन होता है अपना सिस्को के इमेज, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। देखो क्या होता है, देखो डिप्लॉयमेंट हमारा जो होता है वो दो तरह का काम होता है उसमें। या तो एक हमारा फ्रेश डिप्लॉयमेंट होता है, या तो हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप होता है। एग्जिस्टिंग सेटअप में हम क्या करते हैं, हाँ ग्रीन फील्ड, दिस इज ग्रीन फील्ड, दिस इज ब्राउन, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग सेटअप में क्या होता है, हमारा ऑलरेडी हमारा राउटर ASR हो गया, CSR हो गया, ISR हो गया, या फिर जो भी है राउटर होते हैं, वो उनका ऑलरेडी एक इमेज रन होता है। हम क्या करते हैं, अपग्रेडेशन करते हैं, और कभी कभी डाउनग्रेड भी करना पड़ता है, दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। फ्रेश डिप्लॉयमेंट में क्या करते हैं, हम टोटली फ्रेश डिप्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है, सही है। अब देखो SD-WAN में क्या होता है, SD-WAN में भी दो काम होता है, एक तो फ्रेश डिप्लॉयमेंट होता है, और एक हमारा जो है एग्जिस्टिंग सेटअप है, जहां पे हम सिस्को विप्टेला का डिवाइस यूज कर रहे हैं,
और सिस्को का डिवाइस यूज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, या तो अपग्रेडेशन करेंगे या तो डाउनग्रेड करेंगे, दो ही काम करेंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए जो इमेज होता है ना वो अलग अलग होता है, बहुत ध्यान से सुनना। जो दोनों के लिए इमेज होता है ना वो अलग अलग होता है, मतलब एक्चुअली इमेज एक ही होता है, पर दोनों के लिए दोनों का जो यूज होता है ना वो अलग अलग होता है, मतलब दोनों अलग अलग जगह से आते हैं, ठीक है। जो फ्रेश डिप्लॉयमेंट होता है उसमें हमको ना इमेज चाहिए किसके, सबके लिए चाहिए, मतलब सबके लिए मतलब किसको, तो vManage के लिए चाहिए, vSmart के लिए चाहिए, vBond के लिए चाहिए और vEdge के लिए भी चाहिए। पर एक यहाँ पे एक कैच है, जो vBond और vEdge का इमेज होता है ना वो सेम ही होता है, केवल यहाँ पे एक डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे हम एक लोकल कमांड चलाते हैं, एक लोकल कमांड लाइन होता है, कमांड में बताऊंगा बाद में। तो उसके बाद क्या होता है, दोनों बॉक्स ना सेम ही हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को vBond मिल गया, vBond तो आता नहीं वैसे, अगर vEdge मिल गया तो मैं उसको एज vBond भी काम करा सकता हूँ, ठीक है। तो फ्रेश डिप्लॉयमेंट में मुझे टोटली 3 इमेज चाहिए, एक vManage चाहिए, एक vSmart चाहिए, एक vEdge चाहिए। लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप होता है ना उसमें केवल एक ही इमेज होता है, एक ही इमेज में ना वो पैकेज होता है, पैकेज ऑफ किसका पैकेज होता है, vManage का, vSmart का और vBond का, vEdge का /vBond। ये बहुत बहुत गहराई वाली चीज है, समझना इसको, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं देखो कैसा होता है। देखो अगर तुमको फ्रेश डिप्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है, वेयर इन यू आर सेइंग आई वांट टू मैनेज, आई वांट टू हैव माय ओन vSmart, आई वांट टू हैव माय ओन vManage और आई वांट टू हैव माय ओन vEdge। अब ये vEdge होता है ना vBond की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो अगर फ्रेश डिप्लॉयमेंट है तो अपने को ये तीनों इमेज चाहिए, तीनों इमेज को हमको वो इंडिविजुअली डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर अपग्रेडेशन है तो यहाँ पे केवल एक सिंगल इमेज चाहिए, वो ये वाला चाहिए, ये इसी को डाउनलोड कर लो। देखो ये ऑलमोस्ट 3 GB का फाइल है, ठीक है। और यही फाइल अपने को यूज करना पड़ता है टू अपग्रेड द इंटायर SD-WAN फैब्रिक। पर अगर इंडिविजुअल, अगर फ्रेश डिप्लॉयमेंट है तो अपने को तीनों के लिए अलग अलग इमेज चाहिए, vManage का अलग इमेज है, vSmart का अलग है, vEdge का अलग है। तो vEdge को हम जो है एज ए vBond भी काम करा सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। इमेज का मतलब क्या हुआ, इमेज का मीनिंग क्या है, वो iOS वाला इमेज? हाँ iOS इमेज जिसपे वो आपका प्लेटफॉर्म रन होता है, iOS और इमेज। एनी डाउट? और ये अपग्रेड में एक ही इमेज, हाँ यस, ये अपग्रेड में एक ही इमेज कैसे काम करता है? हाँ, अपग्रेड में एक ही इमेज कैसे काम करता है वो जब मैं सेक्शन डिस्कस करूंगा ना ऑपरेशन, तो उसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। ओके ओके, और कुछ? टाइम हो गया ना, 1 मिनट। नहीं अभी 10 मिनट बाकी है सर। यहाँ तो अच्छा 54 इसमें सेकंड कुछ आ और, रहा। इसमें कुछ और समझना है क्या, मतलब कोई अभी डाउट है क्या? चेतन एंड व्हाट अबाउट प्रसाद? नहीं ठीक कुछ है भाई, नहीं। चलो अभी इसको ठीक है। डिस्कनेक्ट होने दो, दोबारा ज्वाइन करो, फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ठीक है। ठीक।